Hello everyone and welcome to Maths Tutor. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसको जितना भी पढ़ते हैं हमें न्यू थिंग्स उसमें नज़र आती हैं. कभी हम इक्वेशन को सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से. कभी हम उसको हमारा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड था हमने वैसे सॉल्व किया. टुडे अ न्यू मेथड that is by using the quadratic formula. Maybe in some ninth class we will discuss about this, that our quadratic formula, and by using the quadratic formula we also find the nature of the roots कि जो हमारे roots आते हैं वो real हैं, not real हैं, equal हैं, not equal हैं, means different हैं और imaginary हैं. These are the nature of the roots and all are determined by our quadratic formula. So roots of quadratic equation by quadratic formula. So very first कि हमारे पास what is the general form of this quadratic equation? It is ax square plus bx plus c is equal to 0. And what is our quadratic formula? It is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. What is this? Is the formula of quadratic formula and it is used for finding the roots. So what is the b here? It is our coefficient of x, b square, 4 constant number, a coefficient of our x square, c this is our constant term. So how we find the nature? कि हम नेचर कैसे पता करेंगे? ये तो सिर्फ हमारे पास एक रूट्स निकालने का फॉर्मूला है. सो हाउ this b square minus 4ac, this is our discriminant, and we denote this by capital D. कि ये जो b square minus 4ac ये जो एक expression है that is our discriminant, and with the help of this discriminant we can find whether our roots are real और नॉट, कि जो हमारे रूट्स हैं वो रियल हैं या नहीं है, वेदर दे आर इक्वल और नॉट. सो इफ दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac इट इज ग्रेटर देन 0, इन दिस केस आवर रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, मीन्स नॉट सेम, कि दोनों हमारे पास अलग आएंगे. इफ दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac इट इज equal to 0, in this case also our roots are real, but in this case they are same, कि दोनों ही रूट सेम आएंगे. फर्स्ट रूट इज अवर 4, देन सेकेंड वन इज ऑल्सो अवर 4, and third one if b square minus 4ac it is our less than 0. In this case our roots are not real and they are imaginary. In this case the real roots do not exist, in which case if b square minus 4ac it is less than 0. So these are the three conditions. First one, if b square minus 4ac it is greater than 0, it means our roots are real and different, means both are different, they have different values. b square minus 4ac is equal to 0, it means they are real and same, and if they are less than 0 it means they are not real, they are imaginary. So what is the condition for the real roots? कि हमारे पास real root की condition क्या है? We don't talk about that whether they are same or not, कि हम बात नहीं कर रहे हैं कि वो same है या नहीं है, we are just talking about real roots. So for this our condition is b square minus 4ac it is greater than equal to 0. This is the condition for our real root. So what is the condition? That is b square minus 4ac it is greater than 0. So
with the help of this we can find the nature of the roots and also find the value of the roots. So take example, three x square minus 4 under root 3x plus 4 is equal to 0. So we have to find the roots of this equation. So first, by using this quadratic formula. So in this formula we have to need B, A, C. हमें इन सब का ज़रूरत है. Then first we compare this equation by our general form of equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. So comparing these two, so on comparing, what is the value of a? It is 3. Value of b, here positive sign, there negative sign, so write the sign also, minus 4 under root 3. Value of c, it is 4. So these are the three values of our variables a, b and c. Now put these values in this. If कि अगर हमें discriminant पहले निकालना है और हमें इसकी जगह पुट करना है तो हम उसको साइड में भी निकाल सकते हैं. अदरवाइज वी कैन डू इट बाय स्टेप. x is equal to minus b. So minus, this minus sign is with in the formula and it is b minus 4 under root 3. Then plus minus both signs, then b square, it is minus 4 under root 3 square minus 4. Value of a, it is 3 and value of c, it is 4 by 2a. Value of a, it is 3. Now this minus and this minus positive, so 4 under root 3 plus minus. So square of any negative term is always positive. 4 4s are 16. Multiply square of under root 3, it is 3. So 16 3s are 48. Minus, these 3 are also in multiplication. 4 3s are 12. 12 4s are 48. By 2 3s are 6. Now x is equal to 4 under root 3 plus minus 48 minus 48 0. कि हमारे पास ये जो पीछे वाली टर्म है वो खत्म ही हो गई है. So it is 4 under root 3 by 6. So 2 2s are 4, 2 3s are 6. And we can also write अंडर रूट 3 की जो हमारे पास 3 होता है हम उसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3. सो अंडर रूट 3 कैंसल्ड बाय अंडर रूट 3. सो आवर आंसर इज 2 बाय अंडर रूट 3. बट इफ b square minus 4ac is equal to 0, then our roots are real and also equal. It means that our both roots have the same value, that is our 2 by under root 3. कि जो हमारे roots हैं उनकी value यहाँ पर 2 by under root 3 रहेगी. This is the type of the cases when our roots are real and equal. Imaginary कब होता है हमारे पास? That when in which case we say that this is our imaginary or roots are imaginary. If it is like this, that 2 plus minus under root 3 by 4 or something like this, कि जो हमारा अंडर रूट है उसके जो अंदर यहाँ पर वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 अगर होती है. लेस देन 0 होने का मतलब कि जो हमारी वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो हमारे रूट्स हैं वो क्या रहेंगे? इमेजिनरी रहेंगे. कब? If the value within the under root is negative, then our roots are imaginary roots. And next कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है कि हमें nature of roots already given है and we have to find a constant in the given equation, कि हमें nature of roots पता है कि वो real है, equal है, not equal है, तो हमें
फाइंड आउट करना है कि जो हमारी इक्वेशन है उसमें कोई एक कांस्टेंट मिसिंग है और हमें उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं 2x² plus kx plus 3 is equal to 0, and in this case our roots are real and equal. Real and equal roots. For real and equal roots our condition is b square minus 4ac is equal to 0. So in this we have to find the value of abc, कि हमें abc की वैल्यू निकालनी है. So compare the given equation with the general form 2x square plus kx plus 3 is equal to 0. So compare with general form, and its general form is ax square plus bx plus c is equal to 0. So compare what is the value of a here 2, value of b is equal to k, and value of c is equal to 3. So first we find b square minus 4ac. Value of b it is k, so k square, minus 4, value of a it is 2, value of c it is 3. So k square minus 4 2s are 8, 8 3s are 24. So it is the value of b square minus 4ac. For real roots, कि हमारे पास real roots के लिए for real and equal roots, कि जो हमारे रियल और इक्वल रूट्स हैं उनके लिए हमारे पास कंडीशन है दैट इज k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, कि जो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac है वो इक्वल होगा 0 के. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 को हम उधर लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली k. यहाँ पर k स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई किया. स्क्वायर रूट हमने इधर अप्लाई किया, स्क्वायर रूट इधर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. k हमने यहाँ पर 24 के फैक्टर्स लिखे, 2 2s are 4, 4 3s are 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are, it is our 24. So these are the prime factors. फिर हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं. सिर्फ यहाँ पर 2 की पेयरिंग होगी, 2 को हम अंडर रूट से बाहर लिखेंगे, सो 2 अंडर रूट 6. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k, 2 अंडर रूट 6. So like this we can find the roots of the equation by using our quadratic formula, and if nature of roots are given then we can also find the value of the missing variable. So this is our quadratic formula, and if you like then don't forget to do comment, like and subscribe. Thank you.